ओके सो नमस्कार मेरे प्यारी बहनें भाइयों बहनों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स हैं जो एक्सेप्शन हैंडलिंग में कुछ टॉपिक्स रह गए थे। मैंने ऑलरेडी एक फुल सेशन अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूं मैं अपने चैनल पर। सो गाइस, इफ यू वांट टू नो अबाउट द एक्सेप्शन हैंडलिंग concept in Java applications, so I have covered the almost all concept which are related to the exception handling. Also, I covered some interview question also, which are very important. Exception handling, yeah. If you talk about the exception handling concept point of view, it is very important. Fine. Now today I want to cover some more question actually. Okay, which are related to the propagate exception. Okay, we will try to manage the propagate exception scenario in our Java applications. So how to manage and what is the scenario of propagate exception. The second things we will try to cover here, like parent-child relationship. When you are making the parent-child relationship, at that time, how we manage the exception handling concept. Because if child class author want to override the parent class feature, parent class method, so what are the rules we have to follow? Okay, interview point of view, it is very important, remember. So propagate exception scenario, parent child relationship. Okay, how we can uh, specify the exception with the help of throws keyword. And the third one is some interview question. Of course, we will like throw some exception explicitly, and if we are not handling those exception, what will happen? Okay, so let's start guys with this topics. Yeah, so my first topic, propagate exception scenario. Okay, so first let me tell you about the basic concept of exception handling, which we already covered. Okay, you can go through my session. Almost all concept guys I have covered. It will be helpful for you to qualify the interview. Okay, but some additional topics I am taking in this session. So first we will start some basic concept of exception handling. So this is just try to understand, this is my program, and if exception is raising from statement 3 line. Okay, if exception is raising from this line, so just assume that any exception is occurring here with this line. So if it is handled, then my program execution will be continue, and my statement 4, statement 5 will get, statement 6 will get executed. Okay, so my program won't get the abnormal termination. Remember, in case of if we are able to handle the exception here, remember in this exception we are able to handle the exception programmatically. Okay, otherwise if we are not able to handle this exception programmatically, my program will get terminated, and these all statement will not get executed. So abnormal termination of my program will get happen here, remember. Okay, so now let's start with the propagate scenario. Yeah, so just try to assume guys here one method is calling to another method, and that another method is calling to another method. Okay, so for your understanding purpose, let's say method 1 is calling to method 2, and method 2 is calling to method 3, and method 3 is occurring one exception, you can say method 3 is throwing one exception. So that exception will be thrown to method 1 because the method 3 has been called from method 2. Now the method 2 has been called to method 1, called by method 1. Okay, so that exception, okay, we that will be thrown by method 2.
to method 1, and the method 1, you know, if you can say if method 1 is able to handle the exception, then okay, program will not terminate. If method 1 is still method 1 also not handling this exception, then you know my program will get terminated. So we'll try to understand in this way here. I have a one, you can say diagram. With this diagram we'll try to understand. So let's say guys, this is my main method, public static void main method, okay, and main method public static void main method is calling to the method 1, okay, method 1, okay. So method 1 is calling to method 2. So let's say we move to method 1, we move to method 1. Now method 1 is calling to method 2. So we move to method 2. Now method 2, just assume, is you know due to some logical error, you can say, in the program, in the code, so it's occurring the exception, and if this exception is handled by the method 2, okay, so if this exception is handled by the method 2, then my program execution will not terminate abnormally. My program execution will be continue. So of course, if handle the exception and resume the program execution, remember, okay. If it is not, if method 2 is not able to handle the exception, then you can say propagate exception to method 1, because method 2 was called from method 1, okay. So propagate exception. Now method 1 is able to handle the exception. If method 1 is able to handle the exception, then my program execution will be continue, okay. So resume the program execution. If not, then remember this method 1 propagate the exception to main method, public static void main method, okay. And if this main method is able to handle the exception, then resume the program execution. Otherwise, my main method execution will get terminated, and the remaining statement inside the main method will not be executed. Remember, okay. So we have understood with this diagram. Now I will show you in the program, guys. So just assume, guys, we have a just try to understand. This is my public static void main method. Here I am trying to call calculate method, and the calculate method is calling the divide by 0 method, and the divide by 0 method is, you can say, calculating the division, but here we are dividing by 0, remember. So just assume at this line exception will occur. We know that because we are dividing by 0, okay. Now if this line exception will occur, so this line will not get executed. So my propagate, this method will propagate to exception to calculate method, and now inside the calculate method also we are not handling this exception, and this method, calculate method, will propagate to exception to main method, because it has been called by main method. Calculate method, okay, is calling by main method. Now inside the main method, if you see, throwing the exception, and here we are catching this arithmetic exception. So my program execution will get continue. It will not terminate abnormally. See, I will, after the catch, I can write any statement here. System dot out dot println. So we are able to handle the exception here. This was propagated by calculate method.
and you can say propagate exception. Actually we are divide by zero method is for propagating the exception. Come to here, and this method propagate to exception, propagating the exception to main method is coming to here. Okay? So ending nj qj. Okay, so number this is just so that, okay, so we are able to handle this exception. So in this way, guys, this propagate scenario, we can manage in our Java application. So exception must be handled. Okay, as far as propagate, you can say. Otherwise, if you do not handle, then of course QRE will handle. But QRE will handle means my program will get terminated. And then we see code propagate error by zero. This error is coming. Propagate error. You got dot message. So that error message is here. Okay. And ending execution. So this actually we handle. But suppose if we do not handle, let's say we do not handle, then see whether this last statement will get executed or not. Let's see. We do not handle, then what will happen? See, a program in this way, my program is getting terminated abnormally. Can you see? Exit code by one. See, can you see what is the exception error? Java.lang arithmetic exception divided by zero. Okay. So here the exception was propagate, but we did not handle. So that's why my program is terminating abnormally. Okay. We want, can you see this line also would not get executed, and this line also get executed. So this already, guys, we have seen. If exception is coming from any line, any statement, if it is handled, then remaining statement will get executed. Otherwise, if it is not ending, if exception not handling, then the remaining statement will not get executed. Okay, fine. Now, okay, guys. So let's see now. Now you have to tell, guys. Let's say I'm putting this. I'm trying to handle. Try catch throw message th. Okay, and we are returning this result from here. This is the interview question, as you have to answer. Okay. Try catch and throw, and remember here. Okay, try to understand. Divide by zero, exception will throw. So of course catch is here. Come to this point, catch block, and we are throwing. So but this result, return result, means this, if exception occur, this statement will not get executed, remember. Okay, so we are throwing the exception, so divide by zero will throw the exception if with this line, if divide by zero. Okay, and that we are handling here, and then we are throwing exception, and of course it will handle here, remember.
because can you see here, calculate calling to the divide by 0, and divide by 0 calculate we are calling from main method, and the result, and see, and if this calculate method, same thing, propagate exception, propagating the exception from this method, you can say handle of course, but we are throwing explicitly, so throwing to propagating here, and then this method will propagate because it's not been handled by calculate method, so it will propagate to main method. Now here we are handling, so you have to tell the output, guys. Handle, and we'll see. Yeah, so throw the exception explicitly. You see, from this line we are throwing the exception explicitly. Now coming to here, and we are not handling here, so it will throw from calculate method. Calculate method, of course, we have calling this method inside the try block, so we are handling here support forget error, and then can you see ending execution. So you can say my program is not terminating abnormally. Okay, now we already know, guys, finally block system must get execute whether exception come or not. So basically finally block, guys, we write to close the connection, database connection, close the file, after performing the reading writing operation on file, after using the database connection. So at the end you can close the connection if we are if developer uh, let me say uh, uh, forget to close the database connection, so we can write the closing statement here inside the final block, which must get execute whether exception come or not. We already discussed, but I want to discuss some interview questions related to the finally block. Fine, so let's see, guys. If you see, we are throwing here, so we see whether this exception will, whether this finally block will get executed or not, because exception is raising from this line, and it is throwing. CRE will throw the implicitly, okay, and catch is already there corresponding to this exception. So it will be caught here and will be catch here, and we are throwing explicitly again from catch block. So let's see whether this final block will get executed or not, because after the catch there is a final block. Okay, so of course it must get executed, because try catch finally, when you write the try catch finally, it is single unit, remember. Okay, so GRE is considering this try catch finally as a single unit. So remember, see, finally block executing, and then of course you throw that exception explicitly, so it will throw by divide by 0 method, it will propagate here that exception, the calculate method, and then we are calling the calculate from main method, so we are handling here the for
Yes, and then ending HP. So remember, so interviewer may ask that what would be the output. So finally block will get executed. Okay? But if interviewer they are asking how we can avoid to execute this finally block, in which case finally block will not get execute. Suppose if any exception is raising from outer try block. So this binary block actually has been linked with this try block, and GRE consider this try catch block as a single unit. So outside this, before try block, if suppose any exception raising from this statement before try block, then finite block will not get executed. Remember, or if you write here system.exit 0, then also will not get executed because you are terminating program expressly. Then after that not. ठीक है, अभी जैसे मान लो अगर मैं इसको यहाँ कर दूँ, लेट्स से ये मैंने यहाँ कर दिया, ये देखो इसके बाद से यहाँ पे नहीं हुआ एग्जीक्यूट ना, अभी कर देता हूँ यहाँ पर से ये ब्लॉक मैं यहाँ कर देता हूँ इससे। अब आप देखना ये जो है ना, ये नहीं होगा गाइस, कि आप देखोगे दिस ब्लॉक आई हैव रिटन आउटसाइड द ट्राई कैच ब्लॉक. ओके, it is not coming inside this try catch block. So try catch block, try catch and finally block they consider as a single unit of statement. Okay, but this is the actually outer statement. So see, आपने यहाँ पर try catch block को आप देखोगे इसको हैंडल तो होगा, लेकिन ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा. देखो फाइनल ब्लॉक, क्योंकि ये उसके ऊपर से ही इम्प्लिसिटली थ्रो हो रहा है, और जब इम्प्लिसिटली थ्रो होगा वहाँ पे तो ये फिर आप देखोगे, देखो यहाँ पर कॉड प्रोपोगेट एरर एंड एंडिंग एग्जीक्यूशन. तो देखो अभी आप देखोगे वी आर नॉट थ्रोइंग द एक्सप्लिसिटली हियर, यहाँ से throwing the implicitly. It is not the part of this try catch binary block unit. Okay, this statement it is a separate statement you can say. तो ये मेथड थ्रो करेगा, calculate method is throwing, and here and we are handling as response. Okay, this you have to remember. Fine. Now अभी गाइस हम यहाँ पे एक चेक और करेंगे यहाँ पर, लाइक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में बात करते हैं. मैं जाऊँगा इनहेरिटेंस के अंदर. ओके, अभी मैं इसकी इधर हटा देता हूँ पहले. ओके, गॉट इट. नाउ आई विल मूव टू द इनहेरिटेंस कंसेप्ट वी ऑलरेडी डिस्कस, बट मैं पूरा इनहेरिटेंस कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा. मैं सिर्फ जो एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड जो इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ. तो अभी मैं बात करूँगा, जैसे आप बोल सकते हो यहाँ पर एनिमल के पास आया, यहाँ पर जस्ट मिनट, यहाँ पर देखेंगे एनिमल आ गया. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जस्ट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. जैसे अभी देखो आप मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये मिक्स साउंड है, तो मिक्स साउंड सपोज मैंने यहाँ पर THRO थ्रोस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पेरेंट क्लास के अंदर अगर कोई मेथड है और अगर वो एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं तो हम उसको कैसे ओवरराइड कर सकते हैं. देखो अभी जैसे मैंने यहाँ पर अभी कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहा हूँ, सपोज इन दिस मेथड फर्स्ट रूल, इफ माई पेरेंट क्लास मेथड नॉट थ्रोइंग एनी एक्सेप्शन, तो मैं चाइल्ड क्लास के पास जाऊँगा, देखता हूँ और इसी मेथड को मैं ओवरराइड करूँगा. वहाँ पे मिक्स साउंड डॉग के पास गया, आप देखोगे मिक्स साउंड, तो यहाँ पर ये आप एब्स्ट्रक्शन कंसेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी सेशन डाले हैं, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं. तो अभी मैं जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मेक साउंड मेथड में ओवरराइड कर रहा हूँ. रिमेंबर एनिमल क्लास इज नॉट थ्रोइंग, एनिमल क्लास पिक साउंड मेथड इज नॉट थ्रोइंग एनी एक्सेप्शन, और जो मेरी चाइल्ड क्लास है डॉग इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम एनिमल,
ये चाइल्ड क्लास है। अब मैं यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। अरिथमेटिक एक्सेप्शन, कोई इशू नहीं है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इट मींस गाइस यहाँ पर आप एनी नंबर ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन आप थ्रो कर सकते हो चाइल्ड क्लास मेथड के अंदर। सो चाइल्ड क्लास मेथड, व्हेन यू आर ओवरराइडिंग any method in the child class, so child class method can throw any number of runtime exception, unchecked exception you can say. This is the my first case. If my parent class method is not throwing any exception and child class method want to throw the unchecked exception, any number of unchecked exception, yes it is allowing in case of overriding you can say, method overriding। ठीक है, आप देख सकते हो कोई इशू नहीं है, कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो ये तो अनचेक्ड एक्सेप्शन की बात होगी। लेकिन अगर मैं चेक्ड एक्सेप्शन की बात करूं यहाँ पर, कैन इंटरव्यू में कैन लाइक इफ parent class method is not throwing any exception, not throwing any checked exception, unchecked exception, then child class method can throw checked exception, any checked exception. Let's see, IU exception will try to throw. See, it is not, what's error, it's not permitted, remember what error compiler is saying, make sound in dog class clashes with make sound in animal. Override method does not throw the IO exception, remember override method does not throw the IO exception। वो ये बोल रहा है कि भाई जो मिक्स साउंड मेथड है जो एनिमल क्लास के अंदर है वो कोई एक्सेप्शन ऐसा थ्रो नहीं कर रहा है, IO एक्सेप्शन यानी चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया, क्लियर हो गया गाइस। अनचेक्ड एक्सेप्शन आप कर सकते हो बट चेक्ड एक्सेप्शन नहीं कर सकते अगर कोई भी हमारा पेन क्लास का मेथड एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहा है। अब सपोज यहाँ पर पेन क्लास का मेथड इज थ्रोइंग द एक्सेप्शन, ठीक है, चारों यहाँ पर मैंने किया IO एक्सेप्शन। ओके, अब मैं डॉग क्लास के अंदर जाता हूँ। लेट्स सी, आप कोई एक्सेप्शन थ्रो मत करो, नो इशू, कोई इशू नहीं है, आप अवॉइड कर लो, कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं करना है आपको। देखो आप देख सकते हो एनिमल क्लास इज थ्रोइंग द चेक्ड एक्सेप्शन and the child class dog method, check class dog class, this make sound method, dog class make sound method not throwing the any exception। ध्यान रखना रूल नंबर 2, पेन क्लास में अगर चेक एक्सेप्शन कॉल हो रहा है तो जरूरी नहीं है आपको चाइल्ड क्लास में भी चेक एक्सेप्शन आपको स्पेसिफाई करना पड़े। चाइल्ड क्लास के अंदर आपको चेक एक्सेप्शन, लेकिन अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हो, ध्यान रखना थ्रोस, ध्यान रखना है आप यहाँ पर एनी नंबर ऑफ अनचेक्ड एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो। जैसे मैंने एक बार और कर सकता हूँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन, कोई इशू नहीं है। आप पेन क्लास इज थ्रोइंग द चेक्ड एक्सेप्शन, पेन क्लास मेथड इज थ्रोइंग द चेक्ड एक्सेप्शन and child class method while overriding in case of overriding is throwing the, can throw the unchecked exception, any number of unchecked exception। लेकिन जब checked exception की बात आएगी ना, यहाँ पर ध्यान रखना, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, अगर आपने यहाँ पर सपोज किया यहाँ पर SQL एक्सेप्शन डाला, सपोज SQL एक्सेप्शन, SQL एक्सेप्शन डाला, ये भी चेक्ड एक्सेप्शन है, तो यहाँ पर एरर हो जाएगी गाइस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये जो चेक्ड एक्सेप्शन है IU एक्सेप्शन और ये जो चेक्ड एक्सेप्शन है ये दोनों अलग है। ठीक है, बोथ आर डिफरेंट, ध्यान रखना। एनिमल के अंदर जो चेक्ड एक्सेप्शन है, जो IU एक्सेप्शन है चेक्ड एक्सेप्शन, और डॉग क्लास के अंदर जो चेक्ड एक्सेप्शन है मिक्स साउंड, ये SQL एक्सेप्शन। ठीक है, तो दोनों की रेयर की अलग है, दोनों की फैमिली अलग है, ध्यान रखना। ठीक है, both are not related to each other but of course they are checked exception, but हेड की अलग है, वो डेटाबेस क्या है और ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये देखो आप क्या कह रहा है, देखो क्लैशेस कर रहा है,
डज नॉट थ्रो द एसक्यूएल एक्सेप्शन, ठीक है। लेकिन अगर मैं अभी मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन बोल दूँ यहाँ पर, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो देखो ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन गाइस, you can say it is child exception of IU exception. It is a subclass exception of IU exception. तो आप समझ रहे होंगे कि गाइस, in case of child class method, when you specify the exception, when you specify the checked exception, at that time you have to remember कि it can throw the either the same exception or their subclasses exception. तो यहाँ पर एनिमल क्लास है के अंदर द मिक्स साउंड मेथड इज थ्रोइंग द आईओ एक्सेप्शन, तो चाइल्ड क्लास मेथड कैन थ्रो द आईओ एक्सेप्शन और देयर सब क्लासेस एक्सेप्शन। तो फाइल नॉट फाउंड इज इट इज द सब क्लास एक्सेप्शन of IU exception. File not found exception is the subclass exception of IU exception. So it can, you can specify, or you can specify the same exception IU exception क्या रहेगा, ठीक है। दिस इज योर स्कोप जो है उसका सेम रहेगा या उसके सब क्लासेस से रिलेटेड रहेगा, ध्यान, ये आपको ध्यान रखना है केस ऑफ ऑपरेटिंग इन चाइल्ड क्लास, ठीक है। सो दिस इज यू हैव टू रिमेंबर। अब आप ध्यान रखना, यहाँ पर आईयू एक्सेप्शन तो कर दिया, लेकिन सपोज यहाँ पर एनी नंबर ऑफ आप अनचेक एक्सेप्शन कर सकते हो, ध्यान रखना। गॉट इट? तो ये आप ध्यान रखना। लेकिन अगर आपने यहाँ पर एक और डाला, मैंने एसक्यूएल एक्सेप्शन, तो एरर आ जाएगा, क्योंकि ये वो कहेगा कि भाई वो थ्रो कर ही नहीं रहा है। तो या तो आप आईयू एक्सेप्शन डालो या उसकी सब क्लासेस का एक्सेप्शन डालना है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज द इंटरव्यू क्वेश्चन गाइस, वी हैव कवर्ड फाइन, एंड so thank you guys, thank you so much.